Today is the 17th foundation day of DFCC. On this very auspicious day, I declare DFCC as the jewel of Indian Railways. This organization has not only created new ways of working, new ways of project execution, it is also setting new benchmarks in the way Indian Railway has to evolve in future. I congratulate the Chairman of Railway Board, Mr. Tripathi ji, Managing Director of DFCC, Mr. Jain, all the senior colleagues of Railway Ministry present here. My very sincere thanks and very warm welcome to our colleagues from Japanese Embassy. Thank you so much, Kombawa. My excellent congratulations and gratitude to Mr. Sorensen for accepting to be the informal global ambassador of DFCC. Thank you for that. Thanks to all the partners who are present here, the partners in progress who have brought new traffic to railways, has helped in construction of the DFCC, and helping us achieve our mission 3,000 million ton. In next about 15 minutes, I will cover 3 points. First point is about some of the reforms that Railways is undertaking right now under the visionary leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. Second one relates to what next for DFCC. We are reaching a level where we are about to complete the project. What next for DFCC? Third point will be my request to all the members of the railway fraternity, railway family, to come up with new ideas. So I'll first take the reforms that we are right now taking up. Railways is probably the most important ministry among all the ministries in the Government of India. Not only if you look at the ministry point of view, but also from the economy point of view. If we take any economy which is 100% served by roads only by roads, that economy will have 16 or 17, 18% as the cost of logistics. If we have an economy which is 100% served by railways, that economy will have a logistics cost of only 6-7%. Whatever the overall logistics cost of an economy is, of a country is basically it's a weighted average of how much railway share is, how much road share is, how much other modes like waterways share is. In our economy, in India, over a period of time, railways was starved of investment. Railway में कोई investment आता ही नहीं था. इसका कारण था, सबसे बड़ा कारण था रेलवे हमेशा एक आइसोलेटेड मंत्रालय की तरह चला. एक अलग थलग रहता था, अपनी काम करने की पद्धति अलग है, अपना बजट अलग होता था, अपना खुद का स्कूल है, खुद का हॉस्पिटल है, खुद का सिक्योरिटी है, खुद की कॉलोनी है. एक तरीके से एक बिल्कुल आइसोलेटेड तरीके से चलता था. जब आइसोलेटेड तरीके से चलेगा कोई भी सिस्टम, तो उसकी ग्रोथ हमेशा स्टंटेड ग्रोथ रहेगी. इसीलिए मोदी जी ने आते ही सबसे पहले रेलवे बजट और जनरल बजट को मर्ज किया. इस मर्जर से जो सबसे इमीडिएट बेनिफिट मिला वो था 2014 से पहले रफली ऑन एन एवरेज 42-43,000 करोड़ का कैपिटल सपोर्ट मिलता था जनरल बजट से. इस मर्जर से, इज इट ओके इफ आई स्पीक इन हिंदी, माय फ्रेंड्स फ्रॉम ओके, I'll probably use both English and Hindi wherever need. So
जनरल बजट में मर्ज करने से 40-42 हजार करोड़ का जो कैपिटल सपोर्ट मिलता था रेलवे को, वो तुरंत डबल होके 90,000 करोड़ के आसपास पहुंचा ऑन एन एवरेज। इतना बड़ा रेलवे सिस्टम, इतना मैसिव नेटवर्क, इतना बड़ा देश, इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट, उसमें 40-42 हजार करोड़ से क्या हो सकता था? 40-42 हजार करोड़ आज के डॉलर्स में ले तो इट्स अबाउट जस्ट अबाउट 5-6 बिलियन डॉलर्स। Increasing that to $10 billion was the first step that Modi ji did. Then there was a question of absorption capacity of railways. Is railways able to absorb that kind of capital support? With about 28 reforms that railways has done, which includes having a standard set of documents for EPC, for PMC, for PSS, for giving lots and lots of powers to the construction organizations in the field, for having very innovative things like hiring retired patwaris and retired foresters for helping in the land acquisition. Many such reforms have happened. 28 is the major reforms that we understand. Creating a new Gati Shakti directorate in Railway Board, which is a multifunctional directorate. 6 departments are all working in one group so that the files don't have to move and decisions can be done faster. Then creating Gati Shakti unit in the divisions. Many such, like giving the power of NI to the field officers. So many such reforms, small and big, have today led to a situation where in the past, budget में जितना होता था budgetary estimate के time में, if 100 rupees was the budgetary estimate, most of the times railways used to surrender at the RE stage. Surrender किया तो अगले साल कम मिलेगा naturally. So it was a vicious cycle in which the ministry and the railway organization was functioning. With all these reforms, now railways has come out of that vicious cycle. It's today in a situation where last year at the stage of RE, we demanded and we got 10,000 crore extra. Then at the B stage, from about 97,000 crore in the FY 19-20 FY financial year, from 97,000 crore GBS, now we have reached 1,37,000 crore GBS. And very recently, thanks to the efforts by the entire railway family and by the finance wing, we have got additional 12,000 crore from the finance ministry for this current year. And we should now aim to reach at least 2 lakh crore as the capital support from the general budget for railways. Then only we will be able to expand railway network to the level that India needs, to the level that we all can, to the level that our peoples and industries and stakeholders' aspirations are fully met. And that means each one of us in this room, from the chairman to the person who's maintaining the track, each one in this room and outside the room, from the member to the station master, from the chief engineer to the supervisor, from the member responsible for maintaining and buying new rolling stock to the mechanic and fitter in the depot, each and every one of us in the 12 lakh family, 12 lakh, 1.2 million railway employees we have. In our 1.2 million plus family, we have to make sure that we achieve superb progress in the field. We must get back what is due to us, not just for the sake of railways, but for the sake of the country. Until and unless we achieve 40% freight share, modal share of the total cargo,
We cannot bring the logistics cost from the 16-17% to the, or 14-15% to the single digit level. To do that, we must achieve 40% modal share in the coming years. What are we doing for that? How we are aiming to reach 3,000 million ton? लोग बोलते हैं 3,000 मिलियन टन है, मंत्री लोग आते हैं, बातें करते हैं, ऐसे ऐसे टारगेट दे देते हैं. मैं अपने से टारगेट नहीं दे रहा हूं. ये टारगेट आपकी कैपेबिलिटीज को देखते हुए डिसाइड हुआ है. एक एवरेज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रेलवे का और एक एवरेज जॉइंट सेक्रेटरी किसी भी मंत्रालय का, अगर आप इनके डोमेन नॉलेज में डिफरेंस देखोगे, on an average, every executive director of Indian Railways would be at least 3 or 4 times more domain knowledge than a joint secretary in the ministry. ये capability एक unique capability है which gives the strength to railways, which gives the strength to the country. हमको मिलके इस strength पे play करना है. आप ही ने पिछले साल 184 मिलियन टन एक्स्ट्रा इंक्रीमेंटल लोडिंग दिए कि नहीं दिए? आप ही ने सबने मिलके दिए. डीएफसी हो, नॉन डीएफसी हो, बेसिकली वी आर ऑल रेलवे फैमिली, आप ही ने मिलके दिए. जो ऑन एन एवरेज 30 मिलियन टन एडिशनल कार्गो होता था, 30 मिलियन टन की जगह 184 कितना हो गया? 6 टाइम्स एक्स्ट्रा आपने किया एक ही साल में. इस साल भी आप अबाउट 120 मिलियन टन एक्स्ट्रा करने के प्रोसेस में हो. अगर 100 मिलियन टन एक्स्ट्रा अगर हम कर सकते हैं 2 साल कंटिन्यूसली, तो 3000 मिलियन टन तक पहुंचने में क्या दिक्कत आएगी? कोई दिक्कत नहीं आएगी. जो लोग नए शेयर्स हैं, जो लोग सोचते हैं कि नहीं ऐसे टारगेट्स नहीं अचीव हो सकते, भूल जाएं उनको. उनकी बात को आप एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देना. उनकी बातों को बिल्कुल ध्यान नहीं देना. रेलवे में वो ताकत है जो 3000 क्या 4000 मिलियन टन तक भी पहुंचा सकते हैं. वो ताकत है अगर किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो है सिर्फ और सिर्फ रेलवे ऑर्गेनाइजेशन है. और उसी ताकत को सपोर्ट करने के लिए बाय नाउ वी हैव आइडेंटिफाइड प्रोजेक्ट्स वर्थ अबाउट 90,000 करोड़, about $10 billion. We have identified projects which are, some are very small projects, some are medium-sized projects, some are large projects, which will remove all the potential bottlenecks in railway, in the movement of goods and cargo and people. 90,000 crore will be sanctioned in the coming few months. Chairman साहब target लेके चलते हैं और लगातार continuously pursue करते रहते हैं, and finance is giving us very good support. With all that support, with all that great ecosystem, this 90,000 crore additional sanctions will help in achieving us the goal of 3,000 million ton. लेकिन केवल प्रोजेक्ट करने से ही कार्गो नहीं आएगा. हम लोगों को अपना माइंड सेट चेंज करना पड़ेगा. पीएम साहब हमेशा एक चीज बोलते हैं, माइंड की कोई कमी नहीं है. माइंड तो सबके पास है भाई. आप लोगों में से मैक्सिमम लोग अपने अपनी क्लास के टॉपर्स में से हो. कितने लोग हैं जो क्लास के टॉप 10% में से हैं? बहुत सारे गोल्ड मेडलिस्ट भी होंगे. टॉप 10% में तो करीब करीब सभी है. तो ये जो टॉप 10% माने क्रीम दिला क्रीम हो आप पूरे अपने अपने क्लास की, अपने सोसाइटी की, अपने स्कूल के, अपने कॉलेज के क्रीम हो, बेस्ट हो. माइंड तो है ही है, माइंड की तो कोई कमी नहीं है. माइंड सेट चाहिए. माइंड सेट को चेंज करने की जरूरत है. पॉजिटिव माइंड सेट, सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंड सेट. काम को कैसे करना है ये सोचे, ये नहीं कि यार काम को रोक देना है, मुझे फाइलों को घुमा देना है, स्पिन कर देना है, रास्ते से निकाल देना है, उसको मैं गिराऊं, उसको उस डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम क्रिएट करूं, वो मेंबर बनने वाला उसकी विजिलेंस की कंप्लेंट करा दूं.
कुछ तो ऐसे होते हैं जो ज्वाइन करने के दिन से मेंबर बन जाते हैं, दिन बदल गए हैं, अब वो नहीं चलेगा, अब परफॉर्मेंस पे जोर होगा, परफॉर्मेंस पे जोर होगा। डिफिकल्ट है, लेकिन माइंडसेट बदला जा सकता है, माइंडसेट बदला जा सकता है। प्रोएक्टिव होके कस्टमर्स के पास जाइए, प्रोएक्टिव होके अपने पार्टनर्स से बात करिए। मुझे इतनी खुशी हुई कि आज आपने मंच पे 2 पार्टनर्स को बुलाया। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग 2 पार्टनर्स ऑन टू द स्टेज एंड मेकिंग देम शेयर देयर एक्सपीरियंस। ये अप्रोच हमको चाहिए, दिस इज द अप्रोच वी नीड। We must go proactively and meet our customers, give our lives for customers, dedicate ourselves to our customers. We must make sure that our customers, our mission should become to bring happiness in the lives of our customers. Solving their smallest little problem should become my major problem. Customers' smallest little problem should become my major problem. Each and every passenger who's traveling, each and every kilogram of cargo which is getting transported on railways must become like gold, like God, like the most important person in my life. Then only we can achieve a mindset of winning. And that is the mindset which makes an organization from average to great to the greatest. और वो capability आप सब में है, वो कैपेबिलिटी आप सब में है। ओनली यू नीड टू प्रोवाइड दैट फंक्शन एफेक्ट्स विच गिव्स ट्रांसफॉर्म्स यू इनटू अ प्रोएक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, इनटू अ सॉल्यूशन ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन, इनटू एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज लुकिंग एट द फ्यूचर, विच इज लुकिंग एट ब्रिंगिंग बैक द ग्लोरी ऑफ इंडियन रेलवेज, वेयर मोस्ट डिफ़िकल्ट प्रोजेक्ट, मैं अपनी टीम जो भी रेलवे बोर्ड में मेरे साथ काम करते हैं, बाकी फील्ड में भी जो काम कर रहे हैं, सबको एक ही चीज़ कहता हूँ, हमें तब तक नहीं रुकना है ऑर्गेनाइजेशनल रिफॉर्म्स में जब तक हम ऐसा ऑर्गेनाइजेशन न क्रिएट कर लें कि देश में कोई भी डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट प्रोजेक्ट हो, डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट काम हो, पूरे देश का कॉन्फिडेंस ऐसा होना चाहिए कि यार ये डिफिकल्ट काम इसको कोई कर सकता है तो रेलवे कर सकता है, और किसी के बारे में हम सोचे भी नहीं। उस लेवल तक पहुंचे जब तक हम, तब तक हमें कंटिन्यूसली डे बाय डे, एवरी स्फेयर, एवरी डायमेंशन, एवरी स्टेप ऑफ आवर लाइफ, वी मस्ट फॉलो the policy of continuous improvement. Continuously हमें improve करना है। गलती करेंगे, कोई बात नहीं, गलतियां 50 होंगी। कोई गलती जो अच्छे इंटेंट से कर रहे हो, मैं गारंटी दे रहा हूं मेरी नजर में आएगी, कोई आपको उसमें पनिश नहीं कर सकता। खराब इंटेंट से, गलत इंटेंट से किए काम को कोई माफ भी नहीं करेगा, लेकिन गलती की पूरी आपको कंप्लीट इनोवेशन का फ्रीडम है, कंप्लीट नए काम करने का फ्रीडम है, कंप्लीट नए तरीके से सोचने का फ्रीडम है। फील्ड में देखो अभी ये सारे रिफॉर्म्स कहाँ से आए, कोई यहाँ से दिल्ली में बैठ के तो हमने नहीं सोचे, रेल भवन में बैठ के तो वी हैव नॉट थॉट ऑफ दीज रिफॉर्म्स। ईच ऑफ दीज रिफॉर्म्स हैव कम फ्रॉम इंटरैक्शन विद द फील्ड पीपल। फील्ड के लोगों ने अपनी जो परेशानियां बताई, परेशानियां सॉल्व की, उससे सुधार हो गया। That is the way we have to continuously move. I'll request especially all the senior officers to make significant change in our mindsets. Then only we can really achieve what we are trying to achieve. ये रिजल्ट, ये जो फोकस है एग्जीक्यूशन पे, लास्ट ईयर आवर capital investment was 1,93,000 crore.
कभी सोचा है रेलवे में, आप लोग जो बहुत सीनियर हो रेलवेज में 20-20, 25-25 साल आपने बिताए हैं, कभी सोचा है इतना 1,97,000 crore का इन्वेस्टमेंट? दैट इज $24 billion was the actual capex last year. $24 billion was the actual capex last year. And this year we will continue that. And we must increase that in the coming years. And the corresponding results in the field are visible. What railways used to do about 4 kilometers a day, commissioning of new tracks, is now quiz. यहाँ बैठे नहीं बोलेंगे. 12 kilometers a day, 3 times. 12 kilometers a day, 3 times. आप हाईवे की कहानी याद रखो. जब तक 5-7 किलोमीटर होता था पर डे, 5-7 किलोमीटर्स पर डे जब होता था, कोई उसका काम, हाईवे का काम फील्ड में दिखता नहीं था. जब वो काम 12 किलोमीटर से ऊपर पहुंचा, 15, 16, 17, 18, आज 18 किलोमीटर पर डे हाईवे, तो काम दिखने लगता है फील्ड में. हम सब भी उसी टारगेट को लेके चलेंगे. वी शुड अचीव 20 kilometers per day as our goal of commissioning new tracks every day, day and night, 24/7. We'll make efforts to reach that level, which will inspire confidence in the country about railways. Stations, 200 स्टेशन का टारगेट कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, लेकिन समय लग गया. अब हमारे पास 138 स्टेशंस के मास्टर प्लान रेडी हुए. 41 स्टेशंस पे काम चल रहा है अभी साइमल्टेनियसली, 41 स्टेशंस पे. बट वी हैव टू रियली रैम्प इट अप. देन ओनली वी कैन डू जस्टिस टू आवर पीपल. मुझे फील्ड में थोड़े दिन पहले पूछ रहे थे, एक यंग इंजीनियर ने पूछा कि हम क्यों स्टेशन पे इतना पैसा खर्च कर रहे हैं. वी आर इन एन एस्पिरेशनल सोसाइटी. The world, India of 2022 is not the same India that was of 1960. This is an India which is exposed to the world. YouTube पे, Insta पे, हर चीज दुनिया भर के चीजें दिखाई देती है. हम सबको पता है टोक्यो स्टेशन कैसा है, हम सबको पता है बीजिंग स्टेशन कैसा है, हम सबको पता है जर्मनी में बर्लिन में कैसा स्टेशन है. हमारे स्टेशन ऐसे क्यों ना हो? हमारे स्टेशन ऐसे क्यों ना हो? हमारी ट्रेन्स यूरोप जैसी, जापान जैसी क्यों ना हो? वंदे भारत आप ही ने बनाई है. आप ही ने, जो यंग इंजीनियर्स, टैलेंटेड टेक्नीशियंस, आप सब ने मिलकर बनाई है. आपने देखा, मैंने आपसे भी थोड़ी देर पहले कहा था कि अगर गलती करोगे बिना इंटेंट के, उसके ऊपर कोई पनिशमेंट नहीं आने दूंगा जब तक मैं हूं. आपने देखा जिन लोगों ने वंदे भारत बनाई थी, उनके ऊपर कई तरह की प्रॉब्लम्स आई थी उस टाइम में. किन कारणों से सबको पता है, इंटर डिपार्टमेंटल राइवलरी के कारण सारी की सारी प्रॉब्लम्स दूर हो गई है. किसी के ऊपर भी वंदे भारत से रिलेटेड एक भी केस पेंडिंग नहीं. क्योंकि फ्रिवलस केसेस थे. तो ये मैं आपसे गारंटी देता हूं, प्रधानमंत्री जी का रेलवे के लिए इतना बड़ा सपोर्ट है, इतना क्लियर सपोर्ट है, इतना बड़ा कमिटमेंट है, बिकॉज ही सिंसियरली बिलीव्स दैट द ओनली वे टू ट्रांसफॉर्म इंडियन इकोनॉमी इज बाय ट्रांसफॉर्मिंग इंडियन रेलवेज. दैट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ रेलवेज इन द माइंड ऑफ द टॉप लीडरशिप ऑफ द कंट्री. तो हम सबको अपना माइंडसेट चेंज करके, अपना एफर्ट लगा के, अपनी मेहनत लगा के, वी हैव टू मेक श्योर that we achieve the results which will fulfill the aspirations of our society today. बहुत सारी चीज़ें हैं बताने को. बुलेट ट्रेन में बहुत अच्छा काम चल रहा है. ऑलरेडी 97 किलोमीटर्स के पिलर्स कास्ट हो गए हैं. जमीन मतलब एक्चुअली कंस्ट्रक्शन हो गया है 97 किलोमीटर्स. फर्स्ट वॉज लास्ट ईयर अगस्त में आप लोगों ने फर्स्ट पिलर कास्ट किया था. And within such a short period, 97 kilometers. So this is the credit all of you deserve. This is the achievement all of you can do.
If we can put our effort together, change our mindset, how much more can we achieve? We can achieve really, जो हम लोगों के माइंड में कॉलेज से निकलने के बाद में जॉब ज्वाइन करते हैं, जो एनर्जी, जो एंथुजियाज्म था, जो अचीव करने का जो जज्बा था, उस जज्बे को हम अचीव आज के इस समय में कर सकते हैं। जय प्रधानमंत्री जी आपको बहुत बहुत पसंद करते हैं, रेलवे को सपोर्ट करते हैं और कमिटमेंट आपके सामने रखते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे अभी मेहता साहब आपने कच्छ रीजन की बात की थी। थोड़े दिनों पहले जब वेस्टर्न रेलवे में इसी तरह से यंगस्टर्स के साथ बातचीत कर रहा था, youngsters told me that the largest deposits of limestone are in Kutch. And today, basis that was about 7-8 months back, basis that input, already the team is now working on preparing the DPR for a project which is about 190 kilometers. It will be a double lane, it will be a freight corridor. Of course, it can be used for passenger also, but it will be a freight corridor kind of construction, about 190 kilometers, and which should bring at least 40 million ton extra cargo to railways. So इस तरह के inputs फील्ड से जब आ रहे हैं, भुज, गांधीधाम, उस एरिया में जो बहुत सारा क्या मिलता है, वो किस तरह की केमिकल है, उस तरह बहुत सारा एक वो पर्टिकुलर केमिकल मिलता है। एक एक जगह से फील्ड से जो आप लोग इनपुट्स दे रहे हो, उन्हीं इनपुट्स के बेसिस पे आगे बढ़ रहे हैं। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ अस to really open our mind, feel that hunger for growth, feel that hunger for cargo, feel that hunger for creating something new, feel that huge urge to do something really different, and do it. This is the time. इससे अच्छा टाइम कहाँ पे मिलेगा आपको? When you have a prime minister who's willing to put in as much funds as are required for railways, without burdening the railway by debt. He is willing to put in as much funds as we can absorb. He is willing to support in whichever ways we want. So this is the time when we should put a real effort together and achieve our dreams. I'll come to the last point, which is about the future of DFCC. What next? We have achieved about 56% of the entire project. Construction is going at very good pace, and we should be able to complete the construction in the coming months. Definitely not in years. We should now be able to complete the construction in coming months. Now the focus has to shift from construction phase to operations and maintenance phase. Yes, there are very good practices which are emerging from freight corridor. Time to integrate railways and freight corridor both physically and logically. Physical integration, I think आपने कितने 10 या 12 पॉइंट ऐसे लिए हैं जहाँ पर रेलवे और फ्रेट कॉरिडोर के बीच में इंटीग्रेशन के लिए about 10-12 points you have taken, new points which you are integrating physically. Logically also we must integrate. The divisions must work in full coordination with the freight corridor teams. And we should learn what is there, what is happening in the freight corridor, and absorb those practices in the railways. And we should also have the reverse osmosis of the good practices of railways into the freight corridor. Hopefully we should create a situation where there is no practical difference between railways and freight corridor in terms of the operations, in terms of maintenance practices, in terms of whatever is the best way to achieve the goals. इसके साथ ही साथ we will also take up many focused freight corridors. Many focused freight corridors.
For example, in Chhattisgarh, a corridor which is about 180 kilometers, but that can add about 70-80 million tons to Indian Railways cargo. That cargo, that will be taken up. In Odisha, there is a corridor of about 200 kilometers connecting a port and a major mining area. That itself will give us about 100 million tons. So we should take up such freight corridors. In Jharkhand, throughout the coastline of India, wherever ports are there, even if it is a 18 kilometer or a 200 kilometer, we should take up that as a freight corridor. We should take up such corridors which will add to our cargo potential in a significant way. Then only we can do justice to the country. Then only we can transform the economy and bring the logistics cost down. So identify such projects, both from the freight corridor side, from the railway side, from industry side, and especially from the industry side. Identify such corridors, identify such new projects which can be taken up, and we will do very rapid DPR work, very rapid approval and sanction process. Already I am told by the field officials that the survey, FLS and DPR sanction work, which sometimes used to take years, many years, sometimes 2, 3 years, 4 years, is now happening in few weeks. ऐसा है? पता नहीं. आप लोगों को शायद नहीं पता होगा because most of you are from DFCC. बट अभी नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के ऑफिसर्स बता रहे थे, वेस्टर्न रेलवे के ऑफिसर्स बता रहे थे, ईस्ट कोस्ट के ऑफिसर्स बता रहे थे, जो काम 2-3 साल में होता था वो अब फ्यू वीक्स में हो रहा है. वैसा कि वैसा इम्प्रूवमेंट आना है. सैंक्शन ऑफ द फाइनल प्रोजेक्ट, सर्वे तो फास्ट हो गया, सैंक्शन में भी नाउ आई एम टोल्ड दैट द स्मॉलर प्रोजेक्ट्स आर गेटिंग सैंक्शनड विद इन 1 month, 1.5 months, which used to take more than a year and so many times never sanctioned. ऐसा भी तो होता है, एक बार गया लूप लाइन में फंस गया, पता नहीं कहाँ है प्रोजेक्ट, पता नहीं कहाँ फाइल. But now that is happening in 1 month, 1.5 months, 2 months. Same speed of sanctions, same speed of execution has to be there in every field. So my gratitude to World Bank officials who supported this project, to JICA, to the government of Japan who have supported this project with extremely generous funding packages and continuous handholding, continuous technology arrangements. My thanks to all the officers of DFCC for making it a jewel of Indian Railways. Thank you.